Hello everyone. The topic which we are going to learn today is simple interest. So today in this video we will be learning about what is simple interest, some of the terms related to it, formula of finding simple interest and few questions which are asked in various competitive examination in last few years. So let's start with the topic that is your simple interest. तो सबसे पहले हम समझते हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट. सो वन ऑफ द टर्म इज योर प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या होता है? सपोज हमें कुछ मनी की जरूरत है और वो मनी हमने या तो बैंक से लिया या फिर किसी पर्सन से हमने बोरो किया. तो जो मनी हमने बोरो किया है वो मनी कहलाता है प्रिंसिपल या फिर सम. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से. सपोज हमें 1 लाख रुपीज की जरूरत थी तो वो 1 लाख रुपीज हमने जिस किसी भी पर्सन से हमने बोरो किया, तो ये जो 1 लाख रुपीज हमने बोरो किया है, दिस 1 लाख रुपीज इज प्रिंसिपल. देन कम्स योर इंटरेस्ट. अब जब हम कुछ मनी बोरो करते हैं तो हमें तो मनी मिल गया, लेकिन जिसने हमें मनी दिया है उसको भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए. तो इंस्टेड ऑफ दिस 1 लाख रुपीज वी विल बी पेइंग सम एक्स्ट्रा मनी. तो ये जो हम एक्स्ट्रा मनी पे करते हैं क्योंकि उसने हमारी हेल्प करी, हमें रिक्वायरमेंट थी, उसने हमें मनी दिया, तो उसके बदले में उसको भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए. सो व्हाट द बेनिफिट इज कि इंस्टेड ऑफ 1 लाख रुपीज ही विल बी टेकिंग सम एक्स्ट्रा मनी. तो ये जो एक्स्ट्रा मनी हम देते हैं या फिर जो जिससे हमने बोरो किया है वो जो एक्स्ट्रा मनी लेता है, उस एक्स्ट्रा मनी को हम बोलते हैं इंटरेस्ट. इंटरेस्ट जो होता है वो दो तरीके का होता है. एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट. सो इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट ओनली. वी विल बी टेकिंग अनदर वीडियो ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑल्सो. तो जो इंटरेस्ट है वो दो तरीके का है. वो एक्स्ट्रा मनी जो कि हमने जो मनी बोरो किया है उसके बदले में हम जो एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, दैट मनी इज नोन एज योर इंटरेस्ट. नाउ व्हाट सिंपल इंटरेस्ट इज. यदि जो भी हमने मनी बोरो किया है, कुछ पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए हमने मनी बोरो किया है, तो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए यदि जो इंटरेस्ट है वो यूनिफॉर्म है, मतलब जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है, जो एक्स्ट्रा मनी हम दे रहे हैं, यदि वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच वी हैव टेकन द मनी, इन सच केस दिस इंटरेस्ट इज नोन एज योर सिंपल इंटरेस्ट. और यदि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, यानी कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो यूनिफॉर्मली कैलकुलेट नहीं हो रहा है, दैट इज नोन एज योर कंपाउंड इंटरेस्ट. दैट वी विल बी लर्निंग इन अनदर वीडियो. सो यदि जो हमने प्रिंसिपल लिया है पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, यदि उस प्रिंसिपल पे उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए इंटरेस्ट यूनिफॉर्मली कैलकुलेट होता है, देन सच टाइप ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज योर simple interest. Simple interest is written as your SI. Simple interest. This is SI. This is how we are writing simple interest. And the formula for finding simple interest is P into R into T upon 100. जहाँ पे P क्या है? P है प्रिंसिपल, R है रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज. अब वो परसेंटेज में था इसलिए हमने परसेंटेज का साइन रिमूव करके 100 डिनोमिनेटर में ले लिया. सो R अगर सपोज इट इज 5% पर एनम मीन्स ईयरली, तो 5% को हम क्या लिखेंगे? 5 अपॉन 100 लिखेंगे. सो दैट्स द रीजन वी हैव नॉट रिटन परसेंटेज साइन ओवर हियर एंड वी हैव ऑटोमेटिकली टेकन 100 इन द डिनोमिनेटर इन द फॉर्मूला इटसेल्फ. तो R is showing your rate of interest per annum. Per annum means per year. That means suppose your rate of interest is 5% per annum. That means हम 100 rupees पे 5 rupees extra yearly देंगे. 5% per annum means 5% means out of 100 we are giving 5 extra. This is your simple interest. That means प्रिंसिपल तो हमें लौटाना ही है, लेकिन प्रिंसिपल के अलावा भी हमें कुछ मनी जो है एक्स्ट्रा मनी है वो हमें देना है जिससे हमने मनी बोरो किया है. तो दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर पर एनम. दैट मीन्स एवरी 100 रुपीज पे हमें इतना रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है ईयरली. टी इज योर टाइम ड्यूरेशन, जितने समय के लिए हमने मनी को बोरो किया है, एंड इट इज टेकन इन योर ईयर्स. जो हम टाइम लेते हैं वो ईयर्स में लेते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जनरली पर एनम में लेते हैं, मतलब ईयरली लेते हैं. अब सपोज यदि टाइम ड्यूरेशन जो है ईयर में ना देखें, इट इज नॉट गिवन लाइक 2 years में कैलकुलेट करो या 3 years में कैलकुलेट करो. इफ इट इज गिवन दैट कैलकुलेट फॉर 5 months, सो हम क्या करेंगे? 5 months को ईयर में कन्वर्ट करेंगे एंड दैट विल बी योर 5 upon 12. यानी कि जो हम टाइम ड्यूरेशन लेंगे दैट विल बी 5 upon 12. वी विल कन्वर्ट इट इनटू ईयर. And if instead of months it is given in days,
सपोज गिवन है कि 3rd ऑफ अप्रैल से लेकर 15th ऑफ अगस्त तक के लिए उसने मनी जो है वो बोरो किया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेट गिवन होती है दैट इज 3rd ऑफ अप्रैल, सपोज दैट द फर्स्ट डेट इज, तो हम 3rd अप्रैल को कैलकुलेट नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। हम जो नंबर ऑफ डेज है वो 4th अप्रैल से काउंट करेंगे, और जो 15th अगस्त तक था तो 15th अगस्त को हम काउंट करेंगे। तो वी विल बी कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ डेज हम कैलकुलेट करेंगे, एंड देन नंबर ऑफ डेज को, if it is your non-leap year, we will be dividing it by 365. If it is your leap year, we'll be dividing it by 366. Accordingly, generally we divide it by 365 only, क्योंकि अगर February कैलकुलेट ही नहीं हो रहा तो फर्क नहीं पड़ रहा कि लीप ईयर है या नॉन लीप ईयर है। तो जो नंबर ऑफ डेज निकलेंगे उसको हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 365. So this is how we will be taking time in your years. Rate of interest जनरली विल बी टेकिंग इन परसेंटेज पर एनम ओनली। परसेंटेज तो हम लेंगे नहीं क्योंकि हमने ऑटोमेटिकली 100 से डिवाइड कर दिया है, तो हम पर एनम ही लेंगे। यदि वो पर एनम नहीं गिवन है, हाफ ईयरली गिवन है, उस केस में या तो हम टाइम को भी हाफ ईयरली ले लेंगे, अदरवाइज इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम एनुअल में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल द थिंग्स विच वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन। So this is how we will be finding what simple interest is. इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज रखेंगे कि प्रिंसिपल कितना हमने बोरो किया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से किया है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए किया है, एंड डिवाइडेड बाय 100. दिस विल गिव यू सिंपल इंटरेस्ट, द एक्स्ट्रा मनी विच वी आर गोइंग टू पे इन रुपीज. Now if the case is like your principal is asked, you are already having simple interest, हमारे पास simple interest given है, rate of interest given है, time given है, और हमें principal find out करना है. So from this formula only we can find out principal. So what principal will be? Principal will be simple interest multiplied by 100 divided by your R and T, R multiplied by T. This is the formula for finding प्रिंसिपल. अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, टाइम ड्यूरेशन गिवन है, सो यूजिंग द फॉर्मूला वी कैन फाइंड द प्रिंसिपल. Similarly, we can find the rate of interest even if principal, time duration and simple interest is given to us. So rate of interest will be simple interest multiplied by 100 divided by P multiplied by T. This is the formula using which we can find the rate of interest. And if time is to be find it out, in that case it will be simple interest multiplied by 100 divided by P multiplied by R. So from one formula only we can derive rest all formulas also. Now what amount is? अमाउंट वो टोटल मनी है जो हम पे करेंगे. प्रिंसिपल तो हमें पे करना ही है, साथ में हमें कुछ एक्स्ट्रा मनी भी पे करना है, यानी कि हमें सिंपल इंटरेस्ट भी पे करना है. तो टोटल मनी जो हम पे करेंगे दैट इज नोन एज योर अमाउंट. So amount will be written as your A. It is equivalent to principal plus your simple interest. प्रिंसिपल हमें पे करना ही था, कुछ एक्स्ट्रा मनी हमें पे करना है, दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट. तो जो टोटल मनी पे करना है दैट इज नोन एज योर अमाउंट, एंड इट इज गिवन इक्विवेलेंट टू योर प्रिंसिपल प्लस योर सिंपल इंटरेस्ट. और यू कैन से principal plus what is the formula for finding simple interest? Just now we have seen P into R into T upon 100. So any of these formula we can use according to the question given to us, and this is how we can find the total money which is to be given back. Now let's see some of the questions which are asked in various competitive examinations. So the first question is, at what rate % per annum of simple interest will a certain sum of money become double in 5 years? यानी कुछ मनी है बोरो किया गया है, वो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, डबल हो जाएगा 5 इयर्स में. टाइम ड्यूरेशन हमें 5 इयर्स गिवन है, और जो मनी है वो डबल हो जाएगा. यानी कि यदि हम अज्यूम कर लें कि प्रिंसिपल P है, इन दैट केस जो अमाउंट है वो क्या होगा आपका 2 टाइम्स ऑफ P हो जाएगा. अमाउंट जो है सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 5 ईयर. यदि सम ऑफ मनी जो भी था, हमने अज्यूम कर लिया कि P था जो सम ऑफ मनी था, वो डबल हो रहा है, यानी कि हमें जो पे करना है या हमने यदि किसी को दिया है, लेंड किया है, तो वो हमें जब देगा, इन दैट केस वो जो मनी रिटर्न होगा या हम पे करेंगे, व्हाटसोएवर द सिचुएशन इन, हमने बोरो किया है या हमने किसी को दिया है, तो जो मनी होगा, जो रिटर्न बैक होगा, दैट विल बी डबल ऑफ द प्रिंसिपल. That means amount जो है वो 2 times of P है. Now the formula just now we have seen is amount is equivalent to principal plus your simple interest. Amount is 2 times of P. It is equivalent to P plus simple interest is your P into R into T upon your 100.
Now 2p minus p हो जाएगा, ये p हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया तो इट विल बिकम 2p minus p. So p is equivalent to p into r into t upon 100. Now we will cross multiply. So it will become 100 times of p. It is equivalent to p into r into value of t is your 5 years. Now p and p both are going to cancel. What the value of r will be? 100 divided by 5 will be the value of r. That means rate of interest is your 20% per annum. What the rate of interest will be? It will be 20% per annum. This is how, using the formula, we can solve the questions. Now let's understand some of the questions related to simple interest. So here is the second question. Anita invested a certain sum for 4 years at 5% per annum and received rupees 850 as simple interest. Sunita also invested certain sum for 6 years at 4% per annum and received rupees 840 as simple interest. Find difference of the sums they invested. यानी कि अनीता ने इन्वेस्ट किया कुछ प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल है दैट इज नॉट गिवन टू अस, 4 इयर्स के लिए 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, और जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 850 रुपीज का मिला. सिमिलरली सुनीता ने भी इन्वेस्ट किया कुछ प्रिंसिपल 6 इयर्स के लिए 4% पर एनम पे और उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला 840 रुपीज का. हमें फाइंड आउट करना है कि जो प्रिंसिपल हैं दोनों के उनमें कितना डिफरेंस है. सो पहला हम ले लेते हैं अनीता की कंडीशन. अनीता की कंडीशन के लिए वी नो द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग प्रिंसिपल. प्रिंसिपल इज गिवन बाय योर सिंपल इंटरेस्ट multiplied by 100 divided by r multiplied by t. This is the formula for finding principal. So for the first condition, that is your Anita, we are assuming principal is your P1. So P1 will be simple interest in this case is your 850 rupees multiplied by 100 divided by rate of interest is 5% per annum and time duration is your 4 years. Now 5, if I am going to divide this, 5 1 is 5, 5 7 is 35, 170 and 4 it will be 4 2s are 8, 25 times. Now if we are going to multiply these two, it will be 0. 25 into 7, 25 into 7 will be your 175. So 175, that means 5 will be over here, 17 will be the carryover, 25 1 is 25, 25 and it will become 35, 42, 4250 will be the principal in the case of Anita. Now the second case is for your Sunita. So we are taking it, suppose we are assuming that the principal is your P2. So what P2 will be? Simple interest. Simple interest is your 840 rupees. So 840 multiplied by 100 divided by rate of interest is your 4% per annum and time duration is your 6 years. Now 4 2s are 8, 4 1 is 4, 210 it is, 3 2s are 6, 3 7 is 21 and it is your 70 and it will become 35. So it is 3500 will be the principal in the case of your Sunita. We have to find the difference of the sums they have invested. That means value of P1 is more than that of your P2. So we have to find the value of P1 minus P2. That is your 4250 minus your 3500 and it will be your 0, 5 and it will be 7. 750 rupees. The difference between the sum they have invested is your 750 rupees. The next question is, Rita invested certain sum of money at certain rate of interest per annum and interest she gets is equal to 1/4 of the sum invested. यानी हम ये मान लेते हैं कि प्रिंसिपल जो इन्वेस्ट किया वो P है. In that case सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? It is your 1/4 of the sum invested. That means it is your P upon 4. Simple interest is your P upon 4. If time period of investment is equivalent to the rate of interest, for how many years did Rita invest sum of money? That means value of R is equivalent to value of T. Rate of interest and time duration is equal. We know the formula for finding simple interest. It is your P into R into T upon 100. Now simple interest is 1/4 of the principal. That means simple interest could be written as your P upon 4. It is equivalent to P multiplied by, now value of R and T both are equal and we have to find
how many years time we have to find. So we will be taking R equivalent to your T only and T also as T only divided by 100. Now this P and this P is going to cancel. 1 multiplied by 100 will become your 100 and it will be 4 multiplied by your T square. T into T will become T square. So what the value of T square will be? It will be 100 divided by 4, that is your 25. So value of T square is 25. So value of T will be root of 25, that is your 5 years. यानी टाइम ड्यूरेशन 5 years है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% per annum है. Now the next question is, a man invested rupees 4,000 at rate of X% per annum. So principal हमें कितना given है? 4,000 गिवन है. किसी मैन ने 4,000 रुपीज इन्वेस्ट किए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है X% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years. टाइम ड्यूरेशन इज योर 2 years. इन स्कीम ए, दिस इज योर स्कीम ए, दिस इज स्कीम ए एंड अमाउंट ऑब्टेन्ड इज इन्वेस्टेड. जो भी अमाउंट ऑब्टेन हुआ, हमने मान लिया कि अमाउंट जो है वो ए है और ये जो अमाउंट ए है जो ऑब्टेन हुआ इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इन स्कीम बी. अब दूसरी स्कीम है बी. इसका जो प्रिंसिपल है वो इसके अमाउंट के इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहां से जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ, उस मैन को रिसीव हुआ, वो उसने इन्वेस्ट किया स्कीम बी में, यानी इस स्कीम बी का जो प्रिंसिपल है वो इसके अमाउंट के इक्विवेलेंट है. टाइम ड्यूरेशन है 2 years, 2 years के लिए इन्वेस्ट किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% per annum. If man received interest of rupees 1,040, जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव किया वो किया 1,040 रुपीज का फ्रॉम स्कीम बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ सी ओवर हियर, so many things are not available over here. We don't know the simple interest, we don't know the rate of interest, but over here we know so many things. So प्रिंसिपल हम अमाउंट के इक्विवेलेंट है, जो प्रिंसिपल है वो यहाँ के अमाउंट के इक्विवेलेंट है. टाइम ड्यूरेशन हमें पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है, तो यहाँ से हमें इस स्कीम बी के प्रिंसिपल की वैल्यू पता चल जाएगी. व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी स्टार्टिंग विद योर स्कीम बी. वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज योर P into R into T upon 100. तो यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो स्कीम ए का अमाउंट है. दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट इज योर 1,040 रुपीज. Amount multiplied by rate of interest is your 10%. Time duration is your 2 years divided by your 100. 1010 cancelled. 2 5 times your 10. So it will be 5 multiplied by 1,040. It is equivalent to your A. Or we can say value of A is 4 5 is 20 and 5 1 is 5. 5,200 rupees is the amount of scheme A. Scheme A से जो हमें amount मिला that is your 5,200. और we can say जो scheme B का जो principal था वो कितना है, rupees 5,200 principal है scheme B के लिए. Now अब हमारे पास यहाँ पे amount की value आ गई, that is your 5,200. So what we have to find is we have to find the value of rate of interest, that is your X. We know amount is equivalent to principal plus your simple interest. Principal is 4,000, we know that, and amount is 5,200, we even know this thing. So it will be 5,200 is equivalent to 4,000 plus simple interest could be written as P into R into T upon 100. So we will be taking P is your 4,000, R is your X%, the value which we have to find, P into R into time duration is your 2 years upon 100. Now this 4,000 will come in the LHS part with the subtraction sign. So 5,200 minus 4,000 will be your 1,200 rupees. It is equivalent to 2 zeros cancelled. 40 multiplied by 2 will be your 80x. 1,200 divided by 80 will be the value of X. 0 0 cancelled. 8 1 is 8. 40. 8 5 is 40. So rate of interest is your 15% per annum. So this is how whatsoever is given to us, accordingly we will be framing the equations and we will be solving it for finding the value of the unknown. Now let's understand some more questions related to the topic. So here is question number 5. Kamal decided to invest his amount in a ratio of 3:2 in 2 schemes A and B
at the rate of interest of 4% and 8% for 4 years and 2 years respectively. मतलब कमल ने डिसाइड किया कि दो स्कीम में मनी इन्वेस्ट करेगा, एक और जो प्रिंसिपल है वो किस रेशो में करेगा, 3:2 के रेशो में करेगा. जो स्कीम ए होगी, हम ये लिख लेते हैं कि हमने मान लिया कि जो स्कीम ए है इसके अंदर इन्वेस्ट किया उसने 3x प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया वो 3x किया. कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया, 4%. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम है और टाइम ड्यूरेशन जो है वो 4 इयर्स है. दिस इज द डिटेल्स अबाउट योर स्कीम ए. नाउ स्कीम बी, अगर स्कीम ए में 3x प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है तो स्कीम बी में कितना करेगा, बिकॉज रेशियो जो है वो 3:2 का है, यानी कि स्कीम बी में उसने इन्वेस्ट किया 2x रुपीज. कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, एंड टाइम ड्यूरेशन इज योर 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया. इफ ही गेट्स ₹1200 एज सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द स्कीम्स टुगेदर, दोनों स्कीम में मिलाकर जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला वो मिला 1200 रुपीज का. सो फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड, तो उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, दैट वी नीड टू फाइंड इट आउट. सो फ्रॉम द फर्स्ट स्कीम जो स्कीम ए है उसमें प्रिंसिपल है 3x का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% पर एनम एंड टाइम ड्यूरेशन इज योर 4 इयर्स. सो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट विल बी P इंटू R इंटू T अपॉन 100. दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम ए. एंड सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बी विल बी 2x multiplied by R is your 8 and time duration is your 2 years divided by your 100. This is the simple interest from scheme B and total simple interest is your 1200 rupees. So this will be the equation which will be formed as per the condition given in the question. स्कीम ए से हमें इतना इंटरेस्ट मिला, स्कीम बी से हमें इतना इंटरेस्ट मिला और जो दोनों स्कीम से टोटल इंटरेस्ट मिला है दैट इज योर 1200 रुपीज. नाउ वी विल बी सॉल्विंग इट फर्दर. It will be 4 4 is 16, 16 to 32 46 48, 16 3s are 48x upon 100 plus 2 2s are 4 and 4 8s are 32, 32x upon 100. It is equivalent to your 1200. Now 100 will be the LCM over here. So what we can do is इस 100 को LCM लेके हमने 1200 से मल्टीप्लाई करा दिया and this will become your 48x plus 32x. It is equivalent to 1200 multiplied by your 100. 48 plus 32 कितना हो जाएगा, 8 to 10 0 कैरी ओवर 1 4 3 7 and 1 8. 80x की वैल्यू हो गई हमारे पास 1200 multiplied by 100. So what the value of x will be, 1200 multiplied by 100 divided by your 80. 0 0 cancelled, 8 1 is 8, 9 then 8 5 is your 40. So it will be your 1500. Value of x will be your 1500. लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है कि टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया. तो फर्स्ट स्कीम में इन्वेस्ट किया 3x रुपीज, सेकेंड स्कीम में इन्वेस्ट किया 2x रुपीज, टोटल कितना इन्वेस्ट किया 3x प्लस 2x, दैट मीन्स 5x का इन्वेस्टमेंट किया गया. 5x की वैल्यू कितनी होगी, जब x की वैल्यू हमारे पास 1500 है तो व्हाट द वैल्यू ऑफ 5x विल बी 5 multiplied by 1500, that is your 15 5 is your 75. So 7500 rupees का total investment किया गया है. The next question is Sunil invested rupees X in scheme A at 15% per annum for 2 years at simple interest and invested rupees X plus 500 in scheme B at 12% per annum for 2 years. If total interest received at the end of 2 years is 4224, find the value of x. तो टोटल इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है 4224. इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया. पहले स्कीम के अंदर जो स्कीम ए है उसके अंदर हम पहले से अगले डिटेल्स लिख लेते हैं. फर्स्ट स्कीम हमने मान ली स्कीम ए है, उसमें एक्स प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया, जो पी की वैल्यू है वो क्या है x रुपीज है. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% पर एनम एंड टाइम ड्यूरेशन इज योर 2 years इज द टाइम ड्यूरेशन. जो स्कीम बी है, स्कीम बी में जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया गया दैट इज योर x प्लस 500 रुपीज का प्रिंसिपल इन्वेस्ट हुआ एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर 12% पर एनम एंड टाइम ड्यूरेशन इज अगेन द सेम, इट इज योर 2 years. टोटल जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एट द एंड ऑफ 2 years इज योर 4224.
सो जो स्कीम ए है उससे हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, दैट विल बी पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. पी की वैल्यू है एक्स इंटू आर इज योर 15 इंटू टी अपॉन 100. ये स्कीम 1 से, स्कीम ए से हमें इंटरेस्ट मिला. प्लस स्कीम बी से कितना इंटरेस्ट मिला, प्रिंसिपल इज योर एक्स प्लस 500 into r is your 12 and t is your 2 divided by your 100, and it is equivalent to your 4224. This is the total interest received. Now see, if we are going to solve it further, it will be your 15 2s are 30, 30x over 100 plus 12 2s are 24. इस 24 को पहले हमने x से मल्टीप्लाई किया, 12 2s are 24, 24 को x से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 24x. अब इस 24 को, ये जो हमारा 24 है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 500 से. सो व्हाट द रिजल्ट विल बी, 2 zeros विल बी देयर, 5 4 is 20, कैरी ओवर 2, 5 2s are 10 and 2 12 divided by your 100. It is equivalent to 4224. Now what we can write it as, 30x over 100 plus 24x over 100 plus 12,000 divided by 100 it will be. अगर इनको हम सेपरेट करें तो it will be 12,000 divided by 100. दोनों को डिवाइड करेंगे तो it will be 120. अगर हम इस पोर्शन को सेपरेटली एक बार सॉल्व करके दिखाते हैं, इट इज योर 12,000 डिवाइडेड बाय योर 100. 2 zeros कैंसिल्ड, ये हुआ हमारा 120. ये वाला जो पोर्शन है इसकी वैल्यू हुई 120. इस 120 को हमने RHS में लिया निगेटिव साइन के साथ, तो दिस विल बी योर 4224 minus of your 120. This will be the value. Now if we will be solving it further, तो यहाँ डिनोमिनेटर आपका 100 हो जाएगा, एलसीएम जो लेंगे तो इट विल बी योर 100. न्यूमरेटर में हो जाएगा 30x प्लस 24x, तो 30 इट विल बी 54x. 54x it is equivalent to, if we are going to subtract it, it will be 4 over here, then it will be 0, then it is your 1 and then it is your 4. 4104 वैल्यू हो गई, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, this 100 will go over here in multiplication and this 54 will go over here in division. So if we are going to solve it, 2 2s are 4 and 2 7 is 14, 2 2s are 4, then it is your 0, then 2 5 is 10 and 2 2s are 4. So whether they are divisible by each other, it should be 3 3 9 is 27, 3 6 is 18, 25 3 7 is 3 8 is 24, then 3 4 is 12, 9 5 is 45, 9 6 is 54, 9 7 is 63, 9 7 is 63, then 9 5 is 45, 9 6 is 54, 76 times. That means value of x will be 76 multiplied by 100, that is your 7600 is the value of your x. Now what we have to find is, find the value of x only, so it will be your 7600 rupees will be the value of your x. Now the next question is, a sum is lent at simple interest at 7% per annum if at the end of 3 years the amount received is 4840, then find the sum lent. So we are assuming जो principal है वो P है और rate of interest कितना given है हमें, 7% per annum given है, time duration हमें given है 3 years का time duration given है, and it is the amount which we are receiving. Amount received is your, that means value of A is given to us as rupees 4840. This is the amount received. Now what we have to find is, we have to find the value of P. So we know that the amount is equivalent to principal plus your simple interest. Amount is your 4840. It is equivalent to principal. We don't know what P is, and simple interest will be P into R. R is your 7 into T is your 3 upon 100. This is the value of simple interest. Now if we will be solving it further, it will be P. If we are going to take the LCM, it will become 100P. 100p plus 7 3s are 21, 21p. This 100 will go over here in multiplication, so it will become 4840 multiplied by your 100. It is equivalent to 100p plus 21p means 121p. So what the value of p will be, 4840 multiplied by 100 divided by 121. So 4 times it will go,
40, that means value of P will be rupees 4,000. 4,000 will be the value of P. That means the sum lent is equivalent to rupees 4,000. This is how whatsoever is given to us in the question, accordingly we will frame the equation and we will solve it for finding the value. Now let's understand last few questions from the topic. So here is the 8th question. A sum of money becomes 3 times at 5% per annum simple interest. At what rate percent will it becomes 6 times in the same time? So money becomes 3 times, that means जो amount है वो 3 times है प्रिंसिपल का, क्योंकि जो मनी हमने बोरो किया या हमने लेंड किया तो वो जो मनी है वो 3 times हो गया. 3 times क्या हुआ? 3 times will be the amount. यानी यदि हम ये मान लें कि जो हमने जो मनी बोरो किया है तो वो मनी यदि P है तो अमाउंट जो होगा that will be your 3 times of P. This is the value of amount because money becomes, that means amount becomes 3 times of the principal. So we know that amount is equivalent to principal plus your simple interest. Now amount becomes 3 times of the principal, that means जो A होगा वो 3 times of P होगा if your principal is P. यदि हम assume कर लें कि principal P है तो amount कितना होगा? 3 times of P होगा plus simple interest. Simple interest will be at 5% per annum. At what rate percent will it become 6 times in the same time duration? Means जो first condition में time duration है और जो second condition में time duration है वो दोनों ही same है. First condition में rate of interest is your 5% per annum. तो हमने यहाँ पे ले लिया principal is P, rate of interest is your 5% per annum and time duration we are assuming to be your T upon 100. This is the equation framed. Now 3p minus p, ये जो p है ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 3p minus p will become 2 times of p. 2 times of p is equivalent to p multiplied by 5 multiplied by t over 100. Now this p and this p is going to cancel. 5 20 times 100. So what the value of t will be? 20 multiplied by this 2. This t will be 20 multiplied by 2. That means 40 years is the time duration जिसके अंदर जो प्रिंसिपल है जो सम है वो 3 times हो जाएगा. अब ये हमारे पास टाइम ड्यूरेशन आ गया फर्स्ट कंडीशन से. यही टाइम ड्यूरेशन आपकी सेकेंड कंडीशन में भी है क्योंकि सेम टाइम ड्यूरेशन गिवन है. हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है लेकिन जो अमाउंट है वो इस समय कितना होना चाहिए? 6 टाइम्स होना चाहिए. एट व्हाट रेट परसेंट विल इट बिकम 6 टाइम्स इन द सेम टाइम? यानी टाइम सेम रहना है लेकिन जो अमाउंट है वो अब 6 टाइम्स हो जाना चाहिए. दैट मीन्स अमाउंट इज योर 6 टाइम्स ऑफ P. इट इज इक्विवेलेंट टू P प्लस सिंपल इंटरेस्ट. जो अमाउंट है वो 6 टाइम्स है प्रिंसिपल का. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस योर सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट विल बी P into R. We have to find the value of R over here क्योंकि टाइम ड्यूरेशन तो सेम ही है. दैट इज योर 40 years का 40 upon 100. Now 6p minus p will become your 5 times of p. So 5 times of p is equivalent to p multiplied by r multiplied by 40 divided by your 100. This 0 and 0 is going to cancel. P and p is going to cancel. So 5 multiplied by 10 will be your 50. 50 is equivalent to 4 times of r. So what the value of r will be? 50 divided by 4. That is your 4 1 is 4. 4 2s are 8. 12.5% per annum will be the rate of interest. At this rate of interest, your principal will become 6 times in 40 years. क्योंकि टाइम तो सेम ही रहना था, टाइम 40 ही रहना था, तो अब किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो 6 टाइम्स हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट का, मतलब अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 6 टाइम्स हो जाएगा. इट विल बी एट 12.5% per annum. Now the next question is केशव इन्वेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 5,400. तो केशव के लिए जो प्रिंसिपल है दैट इज 5,400 एंड तुषार इन्वेस्ट रुपीज 10,200 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो दोनों के लिए ही सेम है. इफ एट द एंड ऑफ 3 years तुषार गेट्स रुपीज 360 मोर इंटरेस्ट देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर 3 years के एंड पे जो तुषार को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है वो केशव से 360 रुपीज ज्यादा मिल रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? हम ये मान लेते हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो R% पर एनम है. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या अज्यूम किया कि इट इज योर R% पर एनम. अब किसको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है? तुषार को इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है.
यानी जितना तुषार को इंटरेस्ट मिल रहा है माइनस यदि हम करें जितना केशव को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 रुपीज के इक्वल होगा। तो पहले हम क्या लेते हैं कि तुषार को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। तुषार को इंटरेस्ट मिलेगा, वी नो द सिंपल इंटरेस्ट इज योर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमने ये अज्यूम कर लिया है कि दोनों ही केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आर है। सो इस फर्स्ट आपका जो सेकंड केस है तुषार का जो केस है उस केस में इंटरेस्ट कितना होगा, प्रिंसिपल इज योर 10,200 इंटू आर इंटू टाइम ड्यूरेशन इज योर 3 years इंटू 3 अपॉन 100। दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट इन द केस ऑफ योर तुषार माइनस सिंपल इंटरेस्ट इन द केस ऑफ योर केशव। केशव को कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, इट इज प्रिंसिपल इज योर 5,400, rate of interest is same, that is r, time duration is even same, that is 3 divided by 100, and the difference between the interest is given to you as 360 rupees। तो जो दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वो 360 रुपीज हो जाएगा। Now if we will be solving it, these two zeros cancelled, 3 multiplied by 102, so that will become 306 r minus these two zeros will be cancelled, 4 3s are 12, 2 carry over 1, 5 3s are 15 and 1 16, 162 r, it is equivalent to 360। Now if we will be solving it further, if we will be subtracting these two, so 6 minus 2 will be your 4 and 10 minus 6 will be again 4, it will become 2, 2 minus 1 will be 1, 144 r is equivalent to 360। So what the value of r will be, 360 divided by 144. If we will divide it by 4, 4 3s are 12, 12 and then 24, 4 5 to 4 6 are 24. Okay, directly it was divisible. 4 your 4 5 4 9 is 36, 90 times. So 6 6 is 36 and 6 1 is 6, 6 5 is 30. 3 2s are 6, 3 5 is 15, so it will be 2.5% per annum। 5 divided by 2 will be your 2.5% per annum, so rate of interest will be your 2.5% per annum। So this is how we will be framing the equation as per the conditions given in the question। Now the next question is, in how many years will simple interest on a sum of money be equal to principal at the rate of 26/7% per annum। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट हो जाएगा कितने समय में, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज योर 26/7% per annum। दैट मीन्स सिंपल, इफ योर प्रिंसिपल इज p, then simple interest is also p। So we are taking principal multiplied by p into r. R will be 7 2s are 14, 14 plus 6, 14 plus 6 will be your 20, 20 by 7 हो गया percentage, so 20/7 multiplied by 100 and time duration we are taking as t, p into r into t upon 100, r की वैल्यू जो होगी that will be your 20/7। ये किसके इक्वल है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इक्वल है प्रिंसिपल के। नाउ p and p both are going to cancel, it will be 1 over here, so 25 times it is 100, so what the value of t will be, 1 multiplied by 7 into 5, 7 5 is your 35, so it will be your 35 years, 7 into 5 we will be doing and 7 5 will be your 35 years के अंदर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल के इक्विवेलेंट हो जाएगा if your rate of interest is 26/7% per annum, so it will take 35 years। Now the last question is, find simple interest on rupees 2000, principal is 2000 at 6.5% per annum, rate of interest is your principal is 2000 rupees, rate of interest is 6.5% per annum for a period from 13th February 2023 to 27th April 2023। अब यहाँ पे डेज में हमें गिवन है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू योर ईयर्स। सी, अब हमने देखा 13 फरवरी है 2023, 23 आपका क्या है, नॉन लीप ईयर है, यानी कि आपका फरवरी जो होगा वो 28 डेज का होगा। नाउ 28 डेज का होगा, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट 13 फरवरी को हम काउंट नहीं करेंगे। तो अगर 13 फेब को काउंट नहीं कर रहे हैं तो हाउ मेनी डेज विल बी रिमेनिंग इन योर फरवरी, फ्रॉम 28 में से हम 13 को काउंट नहीं कर रहे हैं, सो इट विल बी 15 डेज विल बी रिमेनिंग। तो फरवरी के तो बचे 15 डेज,
फिर मार्च में देयर विल बी 31 डेज. फिर अप्रैल के 27 अप्रैल है तो वी विल काउंट टिल 27 ऑफ अप्रैल. सो अप्रैल के हो गए 27 डेज. तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ डेज विल बी 7 + 1 8 एंड 13 1 कैरी ओवर 3 2 5 6 एंड 7 73 डेज हो गए. कितना हुआ? 73 डेज हो गए. अब हमारे पास प्रिंसिपल है 2000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.5% पर एनम एंड वी हैव टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट. So simple interest is P into R into T upon 100. Principal is your 2000. Rate of interest is 6.5% per annum and time duration is your 73 days. So 73 divided by 365 we will be doing for converting it into years. Divided by 100 होना ही था. इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 10 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 73 5 times is your 365. 1 0 2 zeros 5 1 is 5 5 3s are 15. What else is remaining? 2 over here, so 13 2s are 26. So simple interest will be your 26 rupees. Simple interest will be of 26 rupees will be the simple interest. This is how we will be solving the questions, various questions. Hope the concept of the simple interest is clear to you. This is all from this chapter. Soon we will be coming with the more topics related to various competitive examination. Thank you.